The latest technology company limited offered to public for subscription of 50,000 shares of rupees 20 each at a premium of rupees 5 per share. The amount was payable as under: on application rupees 5 per share, on allotment rupees 12 per share including premium of 5 per share, on first call rupees 4 per share, on second and final call 4 per share. Applications were received for all the shares. Allotment was made to all the applicants in full. Ashima failed to pay allotment and call money on 200 shares held by her. Journal entry होगी. Solution: share capital account 200 is multiplied by 24,000. Securities premium 200 is multiplied by 5, 1,000 rupees. To share forfeited account 200 is multiplied by 5, 1,000. To allotment account 200 is multiplied by 12 is 2,400. To share first call account 200 is multiplied by 4, 800. To share second and final call account 200 is multiplied by 4, 800. Forfeiture of 200 shares held by Ashima who did not pay allotment and call money. Forfeitures of shares issued at discount. Discount on issue of shares is a loss to the company when shares issued at a discount are forfeited for non-payment of dues. The discount allowed on such share is returned back. At the time of issue of shares, discount on issue of shares account is debited, and when forfeited, this account is credited to cancel the discount allowed on such shares. In this case, the following journal entries made: share capital account debit, to share forfeited account, to discount on issue of shares account, to unpaid call account. Forfeiture of shares originally issued at discount for non-payment of dues. Illustration: the ever-growing limited invited applications for 20,000 shares of rupees 50 each at a discount of 10% payable as follows: on application rupees 10 per share, on allotment rupees 20 per share, on call 15 per share. All the issue was subscribed and paid for except the call's money on 200 shares which were forfeited by the company. Make journal entry for forfeiture of shares. Share capital account 200 is multiplied by 50, 10,000. To share forfeited account, to discount on issue of shares, and to share first and final call account. Share forfeited में 200 is multiplied by 30, 6,000, and discount on issue of shares 200 is multiplied by 5 rupees, 1,000. To share first and final call 200 is multiplied by 15 is 3,000 rupees. Forfeiture of 200 shares of rupees 50 each issued at discount of 10% of non-payment of call money. Reissue of forfeited shares. Forfeited shares may be reissued by the company directors for any amount of bid. If such shares are issued at a discount, then the amount of discount should not exceed the actual amount received on forfeited shares plus original discount on reissued share if any.
द फॉलोइंग जर्नल एंट्री विल बी पास्ड। जब हरण किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन हो तो हरण किए गए अंश कंपनी की संपत्ति बन जाते हैं। कंपनी के संचालकों को अंतर नियमों द्वारा इन्हें पुनः विक्रय करने का अधिकार प्राप्त होता है। इन्हें सममूल्य, प्रीमियम अथवा बट्टे पर पुनर्निर्गमित किया जाता है। हरण किए गए अंशों को बट्टे पर बेचने की अवस्था में यह छूट किसी भी स्थिति में हरण किए गए अंशों पर प्राप्त राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो हरण किए गए अंश हैं, जो बट्टे पर बेचने की अगर व्यवस्था है तो क्या होगा कि छूट जो है वो केवल उतनी राशि तक ही होगी जितनी राशि का हरण किया गया है। हरण किए गए अंशों पर जो बट्टे को बेचने की अवस्था में जब छूट दी जा रही है तो यह छूट हरण किए गए अंशों पर प्राप्त राशि से अधिक नहीं होगी। यदि 100 रुपये का एक अंश है जिस पर 60 रुपये प्राप्त हो चुके हैं तो जो 40 रुपये नहीं प्राप्त हुए हैं उनका हरण कर लिया गया था। उन अंशों के पुनर्निर्गमन पर 60 रुपये का अधिकतम बट्टा दिया जा सकता है, उससे अधिक नहीं। यदि 100 रुपये का एक अंश है और उस पर 60 रुपये प्राप्त हो चुके हैं और 40 रुपये प्राप्त नहीं हुए हैं, उन अंशों का हरण कर लिया गया है, तो अब ऐसे अंशों को जब पुनर्निर्गमित किया जाएगा तब 60 रुपये से अधिकतम बट्टे की राशि उसको नहीं दी जाएगी। बट्टे की राशि अधिकतम कितनी होगी? 60 रुपये तक ही बट्टे की राशि होगी। तब ऐसी स्थिति में जब पुनर्निर्गमन संबंधी अगर प्रविष्टियां हैं तो वो किस तरह से होंगी? द फॉलोइंग जर्नल एंट्री विल बी पास्ड। क्या होगा? सबसे पहली एंट्री हम कर देंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। बैंक अकाउंट में तो अमाउंट जो रिसीव्ड हो गई वो आ जाएगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट में जब विद ओरिजिनल रेट ऑफ डिस्काउंट ऑफ इशू एट डिस्काउंट वो राशि आ जाएगी। लॉस ऑन इशू आ जाएगा आपका शेयर फॉरफिटेड में, और जो शेयर कैपिटल में है वो आएगा विद फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। सिक्योरिटीज प्रीमियम में इफ शेयर आर री इशूड एट प्रीमियम। आफ्टर द री इशू इफ देयर इज नो बैलेंस इन shares forfeited amount account, then there will be no capital profit, but where there is profit on the reissue of forfeited shares. India Infrastructure Limited has issued at its shares of ₹20 each at a discount of ₹2 per share. Mahima holding 100 shares did not pay final call of ₹5 per share. Later on the company reissued 100 shares of these forfeited shares at ₹15 per share. Make journal entries for the forfeiture and the reissue of the shares in the books of company. Share capital account debit, shares forfeited account, to discount on issue of shares, to shares final call account. शेयर कैपिटल में आपका आ जाएगा 2000 रुपीज़, 100 इज मल्टीप्लाइड बाय 20। शेयर फॉरफिटेड, जिन शेयर्स को फॉरफिटेड किया जा रहा है वो अमाउंट 1300। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज 200, क्योंकि ₹2 का डिस्काउंट है 100 अंशों के हिसाब से।
share final call account 100 shares at the rate of 5 per each. The forfeiture of 200 shares issued a discount for non-payment of final call. Reissue of shares reissued at rupees 15 per share. Bank account debit, discount on issue of shares account debit, shares forfeited account debit, and 2 share capital account. Bank account debit is 1500, discount on issue of shares account debit 200, share forfeited account 300 rupees, and to share capital account is 2000 rupees. 100 shares reissued at 15 rupees per share. Issue of shares for consideration other than cash. अंशों को इशू किया गया इशू ऑफ शेयर्स फॉर उनको नकद के अलावा. Sometimes shares are issued to promoters of the company of the services provided by them during the incorporation of the company. The issue price of these shares is normally debited to goodwill account, and the journal entry is made as follows. Goodwill account debit to share capital account. In case of purchase of assets like building, machinery, stock of material, etc., the following journal entry is made. Assets account debit to vendors or creditors account. Assets purchased. Then second entry is vendors or creditors account debit to share capital account. Issue of shares of rupees each fully paid up. कभी कभी कंपनी अपने कर्मचारियों को इक्विटी अंश प्रस्तावित कर सकती है जिसे कर्मचारी अपनी इच्छानुसार खरीद सकते हैं. इसका उद्देश्य कर्मचारियों को उनकी पूर्ण कार्यक्षमता पर कार्य करने के लिए प्रेरित करना होता है. इसके अतिरिक्त अच्छे व कुशल कर्मचारियों को कंपनी में उनके अंश धारण की वजह से कंपनी में रखा जा सकता है. सामान्यतः व्यवहार में कंपनियों में कर्मचारियों को संपत्ति के रूप में समझा जाता है, खास तौर से सॉफ्टवेयर कंपनियों में जहां तकनीकी ज्ञान की बहुत आवश्यकता होती है. इस तरह की योजना को कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना कहा जाता है. इस योजना में कंपनी के संचालकों, अधिकारियों या कर्मचारियों को कंपनी के अंश पूर्व निर्धारित मूल्य पर खरीदने का अधिकार दिया जाता है. इस योजना में निर्गमित अंशों को कम से कम आवंटन की तिथि से 1 वर्ष तक रखना पड़ेगा. कर्मचारी स्टॉक विकल्प का तात्पर्य कंपनी के कर्मचारियों व अधिकारियों को कंपनी के अंश पूर्व निर्धारित मूल्य पर भविष्य की किसी तिथि को खरीदने के अधिकार, दायित्व ही नहीं का विकल्प दिया जाता है. इस योजना में कर्मचारियों को दिए गए विकल्पों के मूल्य को कर्मचारी क्षतिपूर्ति, एम्प्लॉय कंपनसेशन कहते हैं. इसे स्थगित व्यय की तरह मानकर कर्मचारी को दी गई विकल्प अवधि वेस्टिंग पीरियड में सीधी रेखा पद्धति से अपलिखित कर दिया जाता है. विकल्पों के मूल्य की गणना इस प्रकार की जाती है. वैल्यू ऑफ ऑप्शंस, नंबर ऑफ ऑप्शंस, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स, एक्सरसाइज प्राइस ऑफ द शेयर. जब विकल्प दिए जाते हैं उस समय लेखांकन प्रविष्टि इस प्रकार होती है.
deferred employee compensation expenses to employee stock option outstanding.